Hello and welcome back to the Ashran channel. Today in this video we are going to solve some of the questions of conditional proof. So let's see what are the steps in conditional proof. So conditional proof may first of all, let's suppose if there's a question in which P horseshoe Q is given, let's say P dot Q, P wedge Q, and then P horseshoe Q is given. So what we have to do is assume the antecedent. So assuming the antecedent, meaning the P part, and you'll write assuming conditional proof. Derive the consequent. So by solving or by using the 19 rules, what we have to do is we have to derive the consequent, which is Q. So ये भी आपका second step हो गया. And the third one is conclude the conditional statement from this sequence. So it will be P horseshoe Q, and let's suppose this is first, this is second, this is third, and this one is, let's suppose, seventh. So you just have to write 3 say 7th the conditional proof, simply this. So we'll solve questions and we'll be using just these 3 steps to solve the conditional proof. So let's start with the first question. In the first question, आपका first premise and second premise is given and a conclusion is given. Now the conclusion, this one is your antecedent, n is antecedent, so you're writing n a c p, assuming conditional proof. उसके बाद what you have to do is you have to use the 19 rules. So if you have n here, n यहाँ पे भी है, so by using modus ponens you can get O. In the next, by using modus ponens again you can get P, and then we need O dot P. So for O dot P we can do conjunction of the fourth and the fifth, so you get O dot P. Once you get O dot P, so you can simply write N, which is the antecedent, horseshoe O dot P, and you have used from third to sixth CP. Let's see the next question. Again in the next question, F horseshoe R. So by assuming the antecedent ACP, we have to find the consequent, which is R. So ये simply F अगर आपके पास आ जाता है, so you can use modus ponens, and then F dot E. Why F dot E? Because यहाँ पे you have F, यहाँ पे E, so you have done F dot E by conjunction, and you can use modus ponens again in second and fifth, and at the end you get R over here. So R जैसे ही मिल जाता है, F horseshoe R from third till sixth. So again just draw this line, it will be easier, from third till sixth you're using CP. In the next question, what we can see is we have a G and then we have to find K. So again the first step is by assuming the conditional proof, which is G, and by using G you have used modus ponens, addition, and then again modus ponens, जिससे आपको K का वैल्यू मिल जाता है. In the fourth question, again we have G and C. So G horseshoe C. So again you will be using G, which is your antecedent. So you'll simply write ACP, assuming conditional proof. Now यहाँ पे if you see, आपके पास अगर G मिल गया, तो it would be very easy to get H. So you can just simply add H and you'll get S dot T, and वहाँ से आपको T मिल जाएगा. And once you have T, you can again add U, and then you can get C dot T. And then we need to find C, so आपका C आ जाता है. So by using CP. So again this is a shorter method. By using the rules of replacement and inference, अगर आप same question करते हो तो it will take मतलब a few more steps. So ACP से आपका easily solved हो जाता है comparatively. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, सो अगेन F horseshoe F है, सो अगेन वी आर यूजिंग assuming conditional proof, and by assuming conditional proof if we have A, so you get by modus ponens negation of A wedge E. यहाँ पे आप डी मॉर्गन लगा सकते हो, so you get negation A dot negation E, and further you get A by simplification, and you can simply add F because हमारे पास F नहीं है, so we have added F over here, and by using disjunctive syllogism in number 6th and number 5th you get F. So this is the next question. Now let's see question number
6 in question number 6 again you have the antecedent j, तो आप डायरेक्ट ए सी पी करके ले लोगे एंड वी कैन सी यहाँ पे भी j यहाँ पे भी j, सो अगेन दोनों में आपका मॉडस पोनेंस लग जाएगा. Once you're done with the modus ponens, you see negation of L is here and we have L, L. So यहाँ पे empty आप use कर सकते हो modus tollens. And now we have negation of K, negation of M. दोनों का अगर आप conjunction करके de Morgan कर देते हो, so you get K which M, K which M, K which M आपको मिल जाता है. And then this was required negation of K which M. So आप 4 से लेके 10 में CP. In the next question what we see is negation of N horseshoe M. So in this case what you will be assuming is negation of N, and by using negation of N फर्स्ट ये डायरेक्ट आपका अप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड में कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा. सो इसीलिए व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन फर्स्ट. सो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव डन सिंप्लीफिकेशन, फिर कॉम्यूटेशन, फिर डिसजंक्शन, एंड देन एट द एंड यू गेट एम ओवर हियर. सो आपका सेकेंड से लेके 6 में आपने सी पी यूज़ किया है. In next question what we can see is there's just one consequent. जैसे आपके पास t है, so इस case में we'll be assuming p because p is here, so we'll be just assuming p over here acp करके, and by using p you can use modus ponens you can use. उसके बाद commutation on change हो जाता है places, and then implication, and then you can use hypothetical syllogism. Now hypothetical syllogism आपका 7 and third में use हुआ है, this one, because इन दोनों में you can see that Q is common, so you get R. So R क्यों find कर रहे हैं, because P horseshoe R है यहाँ पे, so P horseshoe R है, so we have P here as the ECP and then you get R over here, so P horseshoe R. 4 से लेके 10 में आपने CP यूज़ किया. Now once you have this you can simply use modus ponens over here and you can get S dot T and then commutation and then simplification. So in such questions not necessary that you have to always consider the conclusion. अगर आपका कंक्लूजन कंडीशनल के फॉर्म में नहीं होता है, सो वी कैन अज्यूम एनी अदर प्रेमाइस से पी. सो अगेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वी सिंपली हैव जस्ट वन एम. सो इस केस में व्हाट वी हैव डन इज़ पहले हमने एच अज्यूम किया ये सी पी से, एंड देन यू गेट आई हॉर्शू एन एंड देन फिफ्थ एंड थर्ड, फिफ्थ इफ यू सी एंड थर्ड एम टी आपका यूज़ होगा, सो यू गेट नेगेशन ऑफ आई. नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आपने जो अज्यूम किया और आपने जो मॉडस पोनेंस से नेगेशन ऑफ आई आ गया, नाउ वी आर कंक्लूडिंग इट हियर, ठीक है, 4th से लेके 6th तक. सो यू हैव टू राइट एच हॉर्शू नेगेशन ऑफ आई, इसमें आपने सी पी यूज़ किया. उसके बाद व्हाट वी कैन सी इज़ नाउ वी कैन सिंपली यूज़ मॉडस पोनेंस अगेन, एंड उसके बाद कॉम्यूटेशन, फिर आपका डिसजंक्शन, 9th and 3rd में again you will be using disjunction, and then you can get the conclusion, required conclusion, which is in the next question number 10. We will be assuming C which B, which is the antecedent, and we'll be using implication, and then again by using 4 and 2 में hypothetical syllogism, 4 and then 2, because B and B over here is common, so इसलिए hypothetical syllogism हम use कर रहे हैं. and 5 में implication and distribution and then simplification of the 7th, and then if you see first का implication C horseshoe A dot D है आपका, उसमें implication, distribution, simplification, commutation is being used. सो अगेन इसमें फिर से नंबर 12 का इम्प्लीकेशन इज़ यूज्ड हियर, नेगेशन है, वेज को हटा के हमने हॉर्शू में चेंज किया. उसके बाद इफ़ यू सी 8th का भी अगेन दिस वन इज़ द 8th, उसमें भी इम्प्लीकेशन लगाया, एंड negation A horseshoe A by hypothetical syllogism. Once you have this, again use implication and then you can get A, and last में you get the conclusion A wedge C horseshoe B, which is the conclusion, required conclusion.
In question number 11, so we have antecedent m, so we'll be just assuming m, assuming conditional proof. So once you have m, आप first से और third में modus ponens लगा सकते हो. Now in the second part what we can do is we can change it into implication. Second में आपने implication use किया, and then implication के बाद fifth में you are using de Morgan, तो यहाँ negation है and then L which n है, so इसमें de Morgan use किया. And after using de Morgan, number 6 में commutation is being used. Commutation के बाद number 7 में आपने distribution, so distribution किया with both. And then उसके बाद 8 का simplification आप कर सकते हो. उसके बाद what you have done is again 9 में commutation and then again implication 10 में. उसके बाद hypothetical syllogism. See in this case we have L horseshoe J and यहाँ पे K horseshoe L. So L L दोनों में common है. So K horseshoe J आपने find किया by using 4th comma 11 में HS and then you get M horseshoe K horseshoe J by 3rd से लेके 12th तक. So it's just draw a line from 3rd से लेके 12th तक you have used CP. In the next question we have F horseshoe G dot H and the conclusion is A horseshoe F horseshoe A horseshoe H. So again you will be assuming the antecedent which is A horseshoe F, so assuming conditional proof, and in first up implication, distribution, commutation, simplification, फिर से implication hypothetical लगाते हो, so you get H A horseshoe H and then you can simply write it down. नेक्स्ट अगेन इज एन ईजी क्वेश्चन. फर्स्ट जो आपका आर गिवन है उसको आप अज्यूम कर रहे हो. बाय यूजिंग आर यू कैन सी यहाँ पे दो जगह पे आप मॉडस पोनेंट्स ईजिली यूज़ कर पाते हो. सो उसके बाद इफ़ यू सी 6 और 5 में वी हैव बी बी, सो इसमें भी अगेन यू कैन यूज़ मॉडस पोनेंट्स. एंड उसके बाद थर्ड एंड again fifth maybe modus ponens, you get F horseshoe H, so again modus ponens and then you get H over here. So it's an easy question. Now this one might seem a bit tricky. So this question is F dot G tri bar H, F horseshoe G, and then the conclusion is in the form of tri bar. So if you know material equivalence का formula is F horseshoe H dot H horseshoe F. So now you know कि अच्छा आपको क्या find करना है. So you have to find F, you have to assume F and then you have to find H. In the second case H assume करके आपको F find करना है. Now let's take the first case, this one F आपने assume किया and उसके बाद modus ponens use किया, फिर conjunction use किया. Now after this what you can do is you can open this by using the equivalence formula. You get F dot G horseshoe H and H horseshoe F dot G, and then simplification and then again modus ponens and finally you get H over here. So जैसे H आ जाता है because we need H, F horseshoe H and then third से लेके 8 में CP. Now in this next case what we'll be assuming is H. So we'll assume H and then you'll solve जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व किया है एंड यहाँ पे इट्स लाइक 13 का सिंप्लीफिकेशन. यू गेट F, so you have F, so you get H horseshoe F and 10-14 CP. Again be mindful कि you might think अच्छा यहाँ पे already H है and यहाँ पे already F है, so we can just directly get H horseshoe F. So that is not the case. So conditional proof में you have to solve step by steps, only then you will be able to get your final answer. So once you have both this part H horseshoe F, so यहाँ पे there will be one more step. So your final answer is F horseshoe H dot H horseshoe F. So यहाँ पे आपका number, this is number 9 and number 15 का conjunction हो जाएगा and in number 17 you can write F tri bar H by using 60 में equivalence. So ऐसे आपको solve करना है and you get the conclusion which is the required conclusion.
Now in the next case, again you have C and then you have to find E horseshoe F. So again by assuming conditional proof and then by using modus ponens, implication, distribution, association, commutation, you get E horseshoe F. And then जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है. So again this question is also not that tricky. So again जैसे ये वाले questions आप solve करते हो, it's important to know the rules of replacement and rules of inference, otherwise it will get a bit difficult to solve the questions. So again in the next question you have Q as the antecedent, so you're assuming Q and by using modus ponens and then by using implication, association, implication, hypothetical, commutation. So by using these formulas, if you'll see negation U, third में if you'll see negation U which R which T by implication and then by association, and again further we're using implication over here. So implication, and once you have implication फिर you can use 9 and 6 में you have T over here, यहाँ पे भी आपके पास T है. So 9 and 6 में hypothetical syllogism will be used, and further 10th में again you're using implication, horseshoe से आप wedge में आ जाते हो, and then 11th में commutation, and उसके बाद फिर से ओके फिर commutation, यहाँ पे फिर 12 में association हो जाएगा. you're changing the brackets over here, and if you'll see negation U which negation U आ रहा है, that means you can simply write negation of U by tautology, and you can get U horseshoe R by implication, and that is U horseshoe R आपको मिल गया. Now if you'll see number 5th one, we have R horseshoe number 5th. Okay, so you have U horseshoe R and then R horseshoe S, so you get U horseshoe S by using hypothetical syllogism. So यहाँ पे association होगा, not commutation. Now next question आपका है P horseshoe Q horseshoe N horseshoe S. So यहाँ पे आपके पास दो बार you have to use the conditional proof. In the first case you have simply taken P horseshoe Q assuming conditional proof, and in the second case I have taken N में ACP assuming conditional proof. उसके बाद if you have N then you can simply get OP by using the MP formula, modus ponens, and then third or second में if you'll see you have third and then you have second, दोनों में Q आपके पास given है, so you can use hypothetical over there, and hypothetical से P horseshoe R dot S आपका आ जाता है. And then what you can do is you can do commutation. This is not required, so you have get commutation P dot O dot P से commutation and then simplification. फिर उसके बाद you can use modus ponens in 6 and 8 में modus ponens, so you get R dot S, and then again commutation, simplification, and then you get N S आपको मिल जाता है. Now यहाँ तक N S मिल जाता है, so you can write N horseshoe S. So N horseshoe S आपको CP से मिल रहा है. So once you get this part you can use यहाँ से लेके number 12 तक, and then you can simply write CP. Next question is question number 18. Again the first antecedent is taken over here, फिर simplification, फिर first और fifth में modus ponens यूज़ किया, first and fifth में modus ponens, उसके बाद number 4th में commutation and then again simplification, and so once you have simplified H, so यहाँ पे भी H है, so again you can use modus ponens, and then 6 और 9 में if you'll see दोनों में G कॉमन है, so यहाँ पे hypothetical syllogism यूज़ हो जाता है, and F horseshoe I जैसे मिलता है, so यहाँ पे भी we need F horseshoe I, so you have modus ponens over here, and then again you have commutation, and finally you get by using the disjunctive syllogism in 12 and number 8, so you get J, फिर आपका final answer आ जाता है. So now again this one is also an important question, because in this again we'll be assuming 2 times. First आप P assume कर रहे हो, so you get P and then ACP. So once you have P you can see that
in first and third you can use modus ponens and you get the answer. एंड फर्दर नाउ वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट फर्दर, सो हम लोग एम भी एज्यूम कर रहे हैं एंड बाय यूजिंग एम यू आर एडिंग एल टू इट and then commutation, and then if you'll see 4 and 7, so you have 4 and then you have 7, L which M, so you can get N dot O, and again commutation, simplification, addition से आपको O which T मिल जाता है. Now once you have O which T, so again यहाँ पे second comma 11 में you have used modus ponens, so to get W आपको मिल गया. सो एम हॉर्स टू डब्ल्यू चाहिए था एंड देन वी गॉट एम एंड देन डब्ल्यू ओवर हियर. सो एम हॉर्स टू डब्ल्यू तक 5 से लेके 12 तक सी पी, एंड दिस इज द एंटीसीडेंट विच इज़ रिक्वायर्ड. सो यू कैन सिंपली राइट पी हॉर्स टू एम हॉर्स टू डब्ल्यू सी पी. नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में भी अगेन यू आर टेकिंग दिस वन एज ए सी पी, conditional proof, assuming conditional proof, and then simplification you have a over here, a over here, so अब b horseshoe c dot negation d कर रहे हो. उसके बाद थर्ड में आपने कॉम्यूटेशन लगा दिया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, फिर फिफ्थ और सेवन में इफ यू से फिफ्थ एंड देन सेवन में मॉडस पोनेंट्स यूज़ करो, एंड वंस यू गेट मॉडस पोनेंट्स अगेन सिंप्लीफिकेशन, एडिशन वाई बिकॉज बी विच ई चाहिए इसलिए हमने ई ऐड कर दिया. सो वी गेट डी विच ई बाय यूजिंग मॉडस पोनेंट्स. एंड एथ में इफ यूल डू कॉम्यूटेशन, सो यू कैन गेट नेगेशन डी डॉट सी. अगेन वाई कॉम्यूटेशन बिकॉज यहाँ पे डी है और यहाँ पे नेगेशन डी है, सो वी कैन यूज़ डिसजंक्टिव सिलॉजिज्म, इसीलिए हमने किया. सो यू गेट सी डॉट ई बाय कंजंक्शन एंड देन द फाइनल आंसर. So that is for so that is all. Thank you for your attention.